the NDA press conference. We cut across live. इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें, जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकाट, ऐसे 40 सीटों पर एनडीए बिहार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार ये जो नारा है वो जमीन पर उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। So that's the big breaking news update coming in on the NDA seat sharing, which has been finalized in the state of Bihar. We were already hearing of how the talks were all done with and an announcement could be expected soon. So here comes the NDA announcement officially. The seat sharing has been finalized. It's going to be 5 seats for LJP, I beg your pardon, Chirag Paswan faction. It's going to be 16 seats for the JDU, 17 seats for the BJP, 1 seat for the Hindustani Awam Morcha and 1 for the RLP. And we just heard it from the partners say that it's another addition of 2 allies compared to the last time. RLSP, the Rashtriya Lok Morcha and the Hindustani Awam Morcha, which were part of the opposition, are also part of the NDA, and that's how the seat sharing is playing out for the NDA in the state of Bihar, with the Chirag Paswan faction of the LJP bagging 5 seats. We have KC Tyagi joining us on the phone line. Mr. Tyagi, your first thoughts. Chirag Paswan's faction gets 5 seats, JDU 16, BJP 17, HAM and RLP get 1 each. 2019 में in 2019 we fought on the 17 seats. We won 16 seats. This time 16 seats has been allotted to JDU and 17 to BJP. 5. Last time it was the 6 seat allotted to LJP. Now this time it is 5 seats has been allotted to LJP and 1 seat to Kushwaha's party. And hopefully we are going to win all the 40 seats. Last time we won 39. This time we are going to win all the 40 seats.
Okay, having battered the opposition 5 years ago, rather optimistic claim that is being made by you, Mr. Tyagi. Many thanks for sharing that perspective with us. My colleague Shivani also joins us with more details. Optimistic claim coming in from the JDU of bagging all 40 Lok Sabha seats. We have the final figures as well on the seat sharing agreement. Shivani. Christine, this is the final seat sharing agreement that has been now made by the NDA. The BJP will be contesting on 17 seats, JDU on 16 seats, and as we had already broken the story that Ram Vilas Paswan, the faction of the party, will be having 5 seats. Chirag Paswan's party will be getting 5 seats in this agreement. And HAM, there are 2 new partners in this alliance. One is the HAM and another one is RLP, which are getting 1 each. And these 2 parties were earlier in the opposition. This time they are a part of the NDA. And this is very important formula that has now brought 5 parties in the NDA alliance for Bihar election, and they claim that they'll be winning all the 40 seats. And if we talk about the seats which the BJP will be contesting upon are the Paschim Purvi Champaran, Aurangabad, Madhubani, Araria, Darbhanga, Muzaffarpur, Maharajganj, Saran, Ujiarpur, Begusarai, Nawada, Patna Sahib, Patliputra, Ara, Buxar and Sasaram. So these are the seats for the BJP, and the JDU will be on Valmiki Nagar, Sitamarhi, Jhanjharpur, Supol, Kishanganj, Katiyar, Purnia, Madhepura, Gopalganj, Siwan, Bhagalpur, Banka, Munger, Nalanda, Jahanabad and Seora. And the 5 seats which have been given to the LJP are also very important out here to mention are Vaishali, Hajipur, Samastipur, Khagadia and Jamui. So this has been now finalized, and we saw a number of meetings took place before. Stay on with us, Shivani. Let's take in a BJP perspective as well. We have Prem Ranjan Patel, spokesperson Bihar BJP, with us on the phone line. Prem Ranjan ji, क्या कहेंगे? अब की बार 40 पार बिहार में? निश्चित तौर पे आज जैसे हमारा गठबंधन का सीटों का ऐलान हो गया, कितनी सीटों पर कौन कौन सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, निश्चित तौर पे एनडीए 40 सीट पर लड़ेगी और 40 पर सफल होगी। 400 पर जीतने का ये पहले से। ये राहुल गांधी जी पहले अपने बड़े हो जाएं। आजादी के चौथी पीढ़ी वही है, 4 पीढ़ियों से इस देश को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे उनके दादा हो, परदादा हो, दादी हो, पिताजी हो, जिसने 4 जनरेशन तक इस देश में राज किया हो, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं किसी से पूछने। इलेक्शन कमीशन ने बिहार के होम सेक्रेटरी को नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के 6 राज्यों में ऐसे कार्रवाई उन्होंने किया है। तो सभी जिस भी प्रदेश में कार्रवाई किया वो इलेक्शन कमीशन इसकी जानकारी। So that's Deputy Chief Minister and BJP leader Samrat Chaudhary. Of course, first reaction coming in from him after the NDA announcement. We also have Danish Rizwan from the Hindustani Awam Morcha with us on the phone line. क्या कहेंगे रिजवान जी, सहमत हैं आप इस अग्रीमेंट से जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला डिसाइड हुआ एनडीए में? पूरी तरीके से हम सहमत हैं और हमने जिन सीटों के बारे में जिक्र किया था वही सीटें हमें दी गई हैं और एनडीए मजबूती के साथ हम बिहार में लड़ेंगे। मजबूती के साथ जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन दिया है, जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो इस नारे को बुलंद करते हुए हम लोगों ने भी बिहार में तय कर लिया है कि बिहार है तैयार, अब की बार 400 पार। तो मजबूती के साथ हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं से कोई शक और कोई गुंजाइश नहीं। 40 पार बिहार में और 400 पार पूरे देश में। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। विद दैट वी आर इनटू अ क्विक कमर्शियल ब्रेक। मोर लाइंड अप ऑन द अदर साइड, वील बी राइट बैक।